Hello students, today we are here to discuss your worksheet number 55 of class 10th science, and today's date is 13 November 2020, and your chapter which are going on is chapter number 10, light. In the last class we have discussed the rules of the formation of the ray diagrams. So let's learn today the images formed by the concave mirror. Please see the diagrams, that these are called the ray diagrams, and below there is a table which display the position of an object, the position of image formed by the mirror, and the size of the image and the nature of the image. Let's discuss the first. First means the position of the object is infinity. If the object is placed at the infinity, see this diagram. If the image is placed at the infinity, the object is placed at the infinity, we know that when the image is placed at infinity, the rays coming from the object, when strike to the mirror, they comes parallel to the principal axis, and when the rays are coming parallel to the principal axis, they pass through the focus. If we draw this diagram some another way as well, let's please see here. If this is a concave mirror and this is the principal axis, suppose this is an object, this is your object which is placed at infinity, and we don't know the position of an object. Okay, for this we can say that we don't know the position of an object. The object is placed at the infinity, so we can draw a ray diagram that the rays are passing parallel to the principal axis, one from this side and one from this side, and when the rays are passing from this is the focus of the, and this is the focus of the concave mirror. When the lines are parallel to the principal axis, they reflect back through the focus from this side and from this side as well. The image is formed at the focus only, and the image which is formed at the focus only, that is of very small or a point size, a very diminished image is formed by the concave mirror when the object is placed at the infinity, and the position of image is at the focus, at the F. So see there, when the object is at infinity, the position of image is at focus, and what is the size of the image? The size of the image is highly diminished and the point size, and what is the nature is real and inverted. Why it is real and inverted? As you see that the image is formed on the screen in front of the mirror, that means on the screen, that means the image is real and the image is in a inverted form. Okay, this is your first, that means the object, the position of the object is at infinity. Let's take the another, when beyond the C. Beyond C, that means please see this figure. When the object is placed beyond C, the one light ray is passed through parallel to the principal axis that reflect to the focus, and another one is passing through the center of curvature, and when it's passing through the center of curvature, it reflects back on the same pathway, that means on the center of curvature. If the both lines are striked in between, where they strike in between C and F, what is the intersecting point of the two rays? That is between C and F. And what is the size of the image? Is very small, very diminished size. Okay, and what is the nature? That is in front of the mirror, that means it is real and inverted. Okay, so here is your second point is also discussed, that beyond C, the image is formed between C and F, the size of the image is diminished and the nature of the image is real and inverted. Third one is when the object is at C. What happened when the object is at C? So you can see that when the object is at C, the image is formed, the image is formed at the C only. Image is formed at the C only, because one ray is parallel like this and another image is passing from the focus. If the ray is passing from the focus, is reflected back
and runs parallel to the principal axis. That means the two rays are intersecting at this point, and this point is just opposite to the object, and the image is formed just opposite to an object of the same size at the same place at the C position. That means beyond C, it's of same size and it's real and inverted. After this, fourth one, when the object is placed between C and F, that means this one. When the object is placed between C and F, the one ray is running parallel to the principal axis and reflect back from the focus. Another ray is oblique to the principal axis and it reflect backs and it intersect beyond the C like this. You can see this diagram. We'll little enlarge this diagram. You can see that कि एक रे जो है वो तो आपकी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो वो फोकस से होकर गुजर के जा रही है. दूसरी आपकी रे जो है वो आपकी ऑब्लिक जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है. तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? सी के पीछे. तो इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द सी. Okay, and the image is inverted and real and it's big in size, right? Then after this, fifth image, okay, fifth one, that is if the object is placed at C, what is the position of an image? It is infinity. You can see here the image is formed at the infinity. दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी में कहीं जाकर मिलेंगे, देन द इमेज इज फॉर्म्ड. तो वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी एंड द साइज ऑफ इमेज इज हाईली एनलार्ज. तो बहुत ही बड़ी फॉर्म होगी. एंड द नेचर ऑफ कोर्स मिरर के आगे है, इट्स मीन्स रियल एंड इनवर्टेड. Sixth one, when the position of the object is P and F, between P and F, that means pole और focus के बीच में होगी. Then what is the position of image? The position of image is behind the mirror. This is very important. ठीक है, this is the only position of an object in which the image is formed behind the mirror. And when the image is formed behind the mirror, that image is virtual and the image is erect as well. Otherwise, all the position is where the image is inverted. ठीक है, this is the only position of an object where the image is formed erect. The size of image is enlarged. Okay, so you have to learn this table. This is very important table. You should learn this table, and according to this table you can try or practice to make this ray diagram. This is very important in this chapter. Let's discuss the image formed by the convex mirror. The convex mirror, we discuss only two ray diagrams in which one, the object has infinity. When the object is at infinity and we know that the line runs parallel to the principal axis, it reflected back through the focus. And for the convex mirror, we take the focus is behind the mirror. The focus is behind the mirror. So the light is reflect back from this side, but there are imaginary focus. We can pass the lines. The lines are go inside the mirror or behind the light rays, or goes behind the mirror and intersect at the focus only. So the image is formed is behind the mirror, and behind the mirror at which position? At F. So when the image is formed behind the mirror, it is of virtual form. And how? It is a erect image. And what is the size of image? It's point size, that means very small. Second one is when the object position is between infinity and the mirror. We can say that the position of the object is anywhere, that means between infinity एंड P के बीच में कहीं भी है. इन्फिनिटी में नहीं है, बट इन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल कहीं पे भी रखा है, वेदर इट्स बिहाइंड द C और C, बिटवीन C एंड F, और बिटवीन एट द F, और बिटवीन F एंड P, कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है. बट द इमेज इज फॉर्म वेयर? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बट बिटवीन P एंड F. द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन P and F. This is P, this is F. The image is formed here. Okay, you can see there. So the image is formed behind the mirror, that means the image is virtual and the image is erect.
the size of the image is diminished, because you can see that the size of object of this and image is this. That means the size of the image is smaller. The convex mirror forms the smaller images of the large object. Okay, that's why we can say that the convex mirror is being used as a rear view mirror in the vehicles. So let's discuss some questions of this chapter. The first question is, why convex mirror is used in the vehicles for rear view mirror? Yeah, same, that thing I have already told you, that because the convex mirror forms a small size images or a very diminished images of a big objects, and the images are erect as well. That's why we use the convex mirror, and the convex mirror is having a very wide view. ठीक है, एज यू सी इन योर व्हीकल्स, इन योर रेयर व्यू मिरर, आपको पीछे का ट्रैफिक दिखाई देता है, इतनी बड़ी बस, सारे स्कूटर, सारी कार आपको अपने मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हैं. वाई? बिकॉज उसका जो व्यू है वो बहुत ही वाइड है, वो बड़े एरिया को कवर करता है, बड़ी एरिया की इमेजेस को जो है वो फॉर्म करता है. ठीक है, और साइजेस जो है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज साइजेस क्या होते हैं, बहुत छोटे और डिमिनिश होते हैं. डेट्स वाई आपको सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस उसके अंदर बहुत क्लियरली दिखाई दे जाती हैं. डेट्स वाई वी यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर इन द व्हीकल्स फॉर द रियर व्यू मिरर. बी, अ स्टूडेंट्स वांट to get real and inverted image. What type of image the student want to get? The real and inverted. And we have already seen that the real and inverted images is formed by which mirror? Yes, concave mirror. ठीक है, the same size and the image is also of same size. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है पढ़ते हुए, कि इमेज फॉर्म हो रही है आपकी रियल और इन्वर्टेड, और आपकी इमेज सेम साइज़ की भी है ऑब्जेक्ट से. बल्कि हम कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज हमेशा छोटी बन रही है, डिमिनिश ऑफ पॉइंट साइज बन रही है, सेम साइज तो बनी नहीं है. डैट मीन्स मिरर आपका कौन सा होगा? मिरर है आपका कॉन्केव मिरर. एंड विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड? एंड ड्रॉ द रे डायग्राम. तो आपको मिरर का नाम लिखना है, तो आपको इसका मिरर का नाम मैं बता ही चुकी हूँ. मिरर आपको यूज़ करना है कॉनकेव मिरर. ठीक है, बात आ जाती है रे डायग्राम की. तो हम देख रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ होता है तो ही पोजीशन सी होती है और इमेज का साइज सेम साइज होता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो हम इसी का रे डायग्राम बना देंगे. और ये रे डायग्राम हमारा कहाँ है? ये रहा. यहाँ से आपको आपका ये रे डायग्राम भी मिल जाएगा. फिर है राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर. आपको एक एक्टिविटी लिखनी है कि आप किसी कॉनकेव मिरर पे किसी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ या किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे फॉर्म करेंगे. इसके लिए बेटा बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है कि आप एक बड़े से ऑब्जेक्ट, या आप ट्री ले लो, आप एक ट्री के सामने कॉनकेव मिरर रखो और उसके मिरर के सामने आप एक पेपर रखो. ठीक है, तो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी, ठीक है, लाइट रेज यहाँ पे आपका जो है क्या है, यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर रखा है. ठीक है, आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. आप ये आपका कॉनकेव मिरर रखा है और बहुत दूर बहुत बड़ा सा ट्री है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस ट्री से जो है रेज टकराएंगी, आके आपके मिरर के पास आएंगी. ठीक है, यहाँ पे आप प्लेस करो एक पेपर, इस और आके जो है रिफ्लेक्ट करके इस पेपर पे पड़ेंगी वो इमेजेस. और आपको पता है कि आपका जो है कैसा होता है, कन्वर्जिंग कर रेज. जो कॉनकेव मिरर होता है इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, वो इन रेज को कन्वर्ज कर देगा ऑन द पेपर, तो आपको पेपर पे एक डार्क स्पॉट नज़र आएगा. और जहाँ पे आपको वो स्पॉट बहुत डार्क नज़र आ रहा है, वहीं पे इस ट्री की क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है. और जहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, आप वहाँ से मिरर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो विद द स्केल, और यही आपकी क्या होगी, यही आपकी फोकल लेंथ होगी. ठीक है, तो यही एक एक्टिविटी है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पता कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस वर्कशीट. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. थैंक यू.